और बड़ा इनका अमल दखल है पार्लियामेंट के अंदर, और ये एक वॉइस भी हैं पाकिस्तानी कैनेडियन की। और आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि इनकी अपनी क्या राय है और क्या ओपिनियन है पाकिस्तानी कैनेडियन के बारे में। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट द पाकिस्तानी कैनेडियन लिविंग इन मिसिसागा? मिसिसागा इज़ वन ऑफ द leading city and very populated by the Pakistani Canadian. We are absolutely blessed in the city of Mississauga to have a very large and growing Pakistani population in general and a strong Muslim population. I think in the last several years we've seen about a half a dozen new mosques come, and the mosques are very prosperous now. And we've watched a lot of capital improvement on our mosques. So our community is growing, it's thriving. They're our neighbors, they're the people that we buy from and sell to, they're the people that we sit beside at work, they're the people that we ride with on the bus and the train. I see. What role you see in the future of the Pakistani Canadian? Well, I think you've pretty much put your finger on it with the name, Pakistani Canadians. I'm privileged to serve in the Ontario Legislative Assembly with Dr. Shafiq Qadri, who represents the riding of Etobicoke North, sits in the legislature. We have Pakistani Canadians in our federal parliament. We have them representing our cities as councillors. And if one looks, there's a thriving South Asian business community here. And an awful lot of people who've done very well in Canada who have come here from the subcontinent, in particular Pakistan. I just heard that you are providing the direct immigration, those supporting the Canadian arms in Afghanistan. Canada is very proud of our involvement in Afghanistan. One of the things that Canadians have done in Afghanistan is to do our best to bring not merely peace but a sense of the institutions that we have here that we take for granted in Canada. One last question, as I mentioned that Pakistan need more trade, not aid. And as Canada and America signing several agreements, the different nationality, as you mentioned, you're signing a contract or agreement with the European countries, a free trade agreement. What about the Pakistan is a frontline state supporting Canada, America, the world, losing life, losing investment, frontline state in war and terror. Don't you think that we are deserve for the free trade agreement? That's exactly why last year when the Premier of Ontario made his first ever mission to both India and Pakistan, he was met at the Pakistani border almost as a visiting head of state. They gave him a procession across. We did a lot of business, the province of Ontario and Pakistan together. Pakistani companies and Ontario companies do a great deal of business with one another, and there isn't a month go by when someone doesn't come into my office with someone who's come over from Pakistan saying, I'd like to do some business here in Ontario and I'd like to have Ontario companies come over to Pakistan and to do business with us. Are going to raise this issue of free trade agreement as you told me? A free trade agreement is one that would be negotiated between the government of Canada and the government of Pakistan. I'm privileged to serve as a representative in the province of Ontario. And I have raised it with my federal brethren and asked them to consider that as well. In the last, what is your opinion about Mr. Shahid Khwaja's success as a Pakistani Canadian? We're very proud of him. We're delighted with the work ethic that he's shown. He's made us all. He elevates the community by the work that he does, and by remembering that we are all a village of people, and to give back to those who he's helped find homes, and to enable each and every one of us to be a little bit more prosperous. Safeerepakistan. Join the Council of the Pakistani American Chamber of Commerce or open a chapter in your city or state. Contact us for more information. Be a part of the business world and get success.
पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या। नादिन, सफीर पाकिस्तान की ये 6ठी अवार्ड नाइट हो रही है और 6ठी अवार्ड नाइट्स में हम इस बार एक नए अंदाज से, एक भरपूर अंदाज से प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये इसमें इंटरनेशनल फ्लेवर होगा, कुछ पाकिस्तान से सेलिब्रिटीज़ भी आ रही हैं, पूरे अमेरिका से लोग इसमें जौक दर जौक हिस्सा ले रहे हैं। इसमें साइंटिस्ट भी हैं, पोइट भी हैं, इंटेलेक्चुअल, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कांग्रेसमैन, सेनेटर, सब इसमें शामिल हो रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान का है। जिस वक्त अमेरिका, कनाडा में नंबर 1 प्रोग्राम है कम्युनिटी बेस, और जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हिस्सा लेती रही हैं, इसको सपोर्ट करती रही हैं और हम गाए बगाए बहुत सी चीज़ें दिखाते रहे हैं। 2007 का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था जिसमें हमने वुमेन ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड्स दिए। इस साल हम यूथ ऑफ द ईयर का अवार्ड भी शामिल कर रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा यूथ है ब्राइट एंड टैलेंटेड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस राइट अवे। हमारा नंबर, हमारा ईमेल देख रहे हैं। सफीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट रंगारंग होती है, बहुत ही ग्लिटरिंग होगी, बड़ी ग्लैमरस होगी और बड़ी मालूमाती होगी। तो मेरी गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें, इसको सपोर्ट करें और इसे पार्टिसिपेट करें और अपने आइडियाज़ भी हमसे एक्सचेंज करें क्योंकि ये आपका प्रोग्राम है। सफीर पाकिस्तान इज़ योर वॉइस, योर चॉइस, नॉट वकार अली खान वॉइस, इज़ योर वॉइस। रिमेंबर, सफीर पाकिस्तान इज़ योर प्लेटफॉर्म। सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 6 मार्च 2010 शेरेटन एनआईएम में होना करार पाई है। ये डिज्नीलैंड से बिल्कुल क्लोज है। तमाम अट्रैक्शंस यहाँ पे हैं, बेवर्ली हिल, हॉलीवुड, सैन डिएगो, यू नेम इट, ब्यूटीफुल बीचेस यहाँ पे हैं। तो अगर आप दूर दराज से आ रहे हैं तो आप टाइम लेकर आएँ ताकि यहाँ की अट्रैक्शंस और यहाँ की खूबसूरती का भी आप नज़ारा कर सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।